other, like for example, molecular docking, genomics, proteomics, and yes, metabolomics, systems biology, and computer-aided drug designing. So, and this course is about the computer-aided drug designing, and we have seen that one of the major application of bioinformatics is uh, the designing drugs. So we try to understand how structures bind other molecules function. Then we design inhibitors. We dock the ligand into the binding site of the receptor. We model the receptor. So a lot of things that we do in CAD. So like is my laser pointer? Can you see the laser? Okay, so this is how this should demonstrate like the ligand is able to bind with specific site, and you can see that like our receptor has got various sites, and this ligand binds to a specific site and performs some sort of interactions, the atomic interactions. The atoms of the ligand binds to the atoms of amino acids, particular specific amino acids present, the atoms of the amino acid present at this specific site we call the substrate binding site or catalytic site or active site. So besides this catalytic active sites, substrate binding sites, there are other sites where the other molecules, like we call them cofactor or coenzyme, the prosthetic groups, they can bind and regulate the activity of this catalytic activity. Besides, there are other sites where protein can interact with other proteins. So this is all bioinformatics thing where we try to study the interaction of protein with the ligand, interaction of a protein with the the allosteric molecules. Other, for example, if it is a inorganic ion, we call a prosthetic group. Means prosthetic group. If it is an inorganic ion, we call it cofactor ions, and if it is a organic molecule, we call coenzyme. So this is how. So what we have seen that here we design molecules. We use the existing molecules, already known molecules, as drugs, and a new field has really developed, and that is the drug repurposing. We referred or we coined the term repurposing of the drugs. So drugs, those which have already there in the market and is being used for specific disease, can be remodeled again, can be used for other purposes also. So that is why we call it as drug repurposing. So and in bioinformatics, the designing of drug is again a very important task that today we will discuss. How do we design our, what are the drug development process? But we call this process in bioinformatics the rational drug designing. So the core idea of CAD is that knowing the target protein's 3D structure allows chemists to custom design a molecule that perfectly fits its active site. The design of inhibitors and other protein binding compound therapeutic use is often facilitated
by knowledge of protein structure, and we know we resolve this structure of the protein through crystallography or NMR imaging, and it allows narrowing down the range of potential compound to synthesize and test. So here, like this image about shows the HIV proteases, which is in cartoon color, so that like we can easily identify secondary structure elements like beta strand. Okay, we'll see the last time will permit. We will see the details of visualization using Chimera tool today. So let's begin. What is a drug molecule? What is a drug? It's important. So a substance that, when absorbed, alters normal bodily functions can be referred as drug. Or we can say that, like in pharmacology, FDA approved for the diagnosis, treatment, prevention of disease. So, drug can be any substance. Okay, and when we absorb, it alters our normal function. It react with our body. So, in drug designing, basically in pharmacology, we basically focus on two key areas of like how drug works. First is called the pharmacodynamics, which is what the drug does to the body, its effect and mechanism of action. We call it as pharmacodynamic, that drug does to our body. And second is pharmacokinetics, that is what the body does to the drug. For example, its absorption, its distribution, and metabolism, and finally the excretion. We, in simple words, call it as ADME property of the drug. So pharmacokinetics and pharmacodynamics. So pharmacodynamics, basically the effect of the drug that causes our body to take action, the, the, its effect to our body, and in dynamics we that our body responds, how our body create a response to drug. So we can define the drug uh, uh, as a chemical substance other than food or essential nutrients, which when administered to living organism produces biological effect. So there are two different categories: that pharmaceutical drug, that is medication, and another is psychoactive drug, that is recreational substance of abuse. So this medication is used to diagnose, cure, treat, mitigate, or prevent a disease, like antibiotics, pain relievers, insulin, vaccines. All these are the pharmaceutical drugs. Another is these psychoactive drugs, refers to substance taken primarily to affect central nervous system, altering mood, perception, consciousness, or our behavior, like caffeine, nicotine, alcohol, cannabis. So these are two different kinds of a drug. So, and what we have observed is most drug targets are enzyme, because their function catalyze, catalyzing specific biochemical reaction, it is central to life conditions, and their active sites are highly suitable for inhibition by small molecules drugs. So, if we take example, drug aspirin, acetylsalicylic acid, it's a classic example of an irreversible enzyme inhibition. And this inhibitor targets the cyclooxygenases, COX-1, COX-2 family of enzymes, COX. So, so, so here we have a target, substrate, and product, and what role it plays inside our body.
cyclooxygenase COX-1, COX-2 enzymes, and role in drug action. So aspirin irreversibly inhibits both COX-1 and COX-2. So these inhibitors are responsible for producing the prostaglandins. So prostaglandins and thromboxanes. So any sort of inflammation, fever, whatever. So this enzyme produces prostaglandins. So this prostaglandins, if we block this, then we can inhibit. So this we design molecules which can inhibit this cyclooxygenase. So it will not convert this arachidonic acid into prostaglandins. So for example, here aspirin inhibits COX-1 and COX-2 inhibitors. Aspirin prevents the substrate from altering the active sites. Aspirin dramatically reduces production of these products. Okay, so this is how a drug occurs. So if we talk about the mechanism of action, so COX enzymes are responsible for converting this arachidonic acid into these prostaglandins, which are lipid molecules, and that signals basically pain, fever, inflammation, and similarly thromboxane, which promote blood clotting. So how it acts basically? Aspirin work by performing an acetylation reaction. This aspirin covalently permanently attached to a small chemical group, that is basically the acetyl group, to a specific serine residue, which is present in the active site of COX enzyme. And what is the result? This irreversible binding physically block the active site of this COX enzyme, preventing the natural substance, that is the arachidonic acid, from accessing this site. Okay, and if it binds and if this doesn't perform its activity, it will not form prostaglandin, thereby stopping the production of this prostaglandins and, like for example, clotting. This is clotting causing. These thromboxanes are responsible for clotting. So it binds with this and stop their activity. Okay. So this single inhibition mechanism explains how all these aspirins major effect like pain, pain relief, fever reduction, anti-inflammation, blood thinning. It's, so this is how a drug perform an action, and it react with the protein molecules and and alters the activity. Here, like in this case, the active sites of the COX enzyme. So so this is how this mechanism is basically exploited. So we look for various targets available in human body, particularly the enzymatic targets, and we design compounds, and so that the compounds can target, and so the that particular thing, the particular enzyme can be stopped and stop to perform its activity. Okay, so if you look at the other targets which are acting as enzymes, like for example, acetazolamide, carbonic anhydride, clinical uses in glaucoma, aspirin, I have just explained, amoxicillin, that is penicillin binding protein responsible for bacterial infection. In case of bacterial inflammation, we prescribe this antibiotic. So, digoxin and enzymes, this used in case of heart diseases. For peptic ulcers, we use omeprazole. We have a family of perazole, that is pantoprazole, omeprazole, riboprazole. Also, they target this potassium, that is
pump, potassium pump, sodium potassium pump. So this enzyme is responsible. So we attack this enzyme. Similarly for cancer, like aldosterone enzyme to target. So sorbinol in case of inhibiting this aldosterone. So overall, if you look at the development of a drug, so what are our objective? क्या हमारे objectives हैं for drug development? So you can say like uh, so we look for these two properties. I explained just pharmacodynamics and pharmacokinetics. These are pharmacological terms, pharmacodynamics, where like what drug does to the body, and pharmacokinetics, what body does to the drug. Okay, so it's absorption, it's distribution, it's metabolism, and excretion. So this is the so if we make a drug with the aim, for example, drug should have a good selectivity for its target protein. Drug should have a good level of activity for its target. Drug should have minimum side effects. Drug should be easily synthesized. Drug should be chemically stable. Drug should have an accepted pharmacokinetics property. Drug should be non-toxic. So, when we create any molecule for a specific target, we must consider these points. This is our aim, and we try to reduce the side effect. We try because any chemical, if it reacts with our body, any chemical, if it is a drug, so it will definitely produce some side effects. Side effect will be there. People say, yeah, there may be lesser side effects, minimum side effect, but all chemicals which react to our body, they will definitely will have side effects. Okay, so drug designing is the important task, and we know traditionally we have been designing drugs. So the process of traditional drug development often began with step one, where we say natural treatment for illness ailments, and most of these compounds were the originated from the plant. For centuries, medical knowledge was based on observation of how various plants and natural substances could alleviate symptoms, cure diseases, or treat injuries. So, once a promising natural remedy was identified, the next challenge was to isolate that compound, small organic compound. This involved painstaking work to extract, purify, and identify the single chemical molecule which is responsible for therapeutic effect. Okay, so shifting the focus from the crude plant mixture to define small organic compound. Okay, so which further uh, involve the synthesis of the compound in the lab, which allow the chemist to produce the active ingredient in consistent and controlled manner in the laboratory, ensuring purity and large-scale supply without relying solely on limited natural resources. And finally, recognizing that the natural occurring molecules might not be the most potent or safe, chemists would move to the optimization of that molecule and manipulate the structure to get better drug. And it involves making targeted chemical alterations to the structure, core structure of
in a drug to improve the efficacy and reduce the toxicity and side effects. It increases the stability and enhance the properties like bioavailability, ultimately leading to superior and superior medications like aspirin, ibuprofen. So this is our natural way, the conventional method, and so this the conventional methods, are very lengthy. It's not, takes, you know, say 15 to 20 years for a compound to come to a market. So let's discuss about the drug development cycle. So if you talk about the drug development pipeline, so it has few steps. Millions of compounds exist, and out of which we reach to a very limited number of a compound, probably a single drug. So from developing assay to approval and marketing of the drug, on average it takes 10 to 12 to 15 years and costs 500 to 800 million dollars to bring to bring a drug to finally the market. So the process of finding and developing a new drug is very very lengthy and of course very expensive. Typically, it's highly costlier, it's very costly affair. So people put a lot of money, and the chances of getting a molecule like a drug, it's very very chances are very less. But instead, if they come up with the molecules, they become billionaire. So this begins with identifying a potential candidate and progress through rigorous refinement and testing. So this assay development, and this is basically the high throughput screening of molecules. Is the initial steps where like we create a lot of biological assay, and this is essentially a standardized laboratory test designed to measure compounds effect on the biological target like an enzyme or a cell line. This test is must provide a quantifiable or say a visible indication of effective treatment. It is like, for example, cell death in a cancer culture or a growth inhibition of a microorganism. It should be very manifested clearly in the assay. This validated assay is then used in hydrogen screening to test large library of molecules. Because all pharmaceutical industry, they have their own large set of libraries, millions of compounds. So once they identify and they validate it, they screen, they perform high throughput screening, and then they come up with a drug-like molecule, which we also call a lead molecule. So they identify a lead molecule which has a property to become a drug. So any molecules we screened, developed after developing an assay, high throughput screening become a molecule which possesses the property and which has ability to convert finally into a drug molecule. So we take this molecules, lead molecule. So this is this process finding the lead compounds molecules that these potential lead molecules. So they demonstrate
the desired activity in the assay. Although these compounds show some effectiveness, they are hardly perfect. So, candidate molecule at this stage possess, possesses activity against the disease and serve as starting point for further development. That is the refinement, optimization, and refinement. So, this is the critical stage involve chemically modifying the structure. In optimization or say refinement, we chemically modify the structure of this lead to turn it into a viable drug candidate molecule. Okay. So the goal of optimization basically are first to enhance the potency, that is increase the drug's effectiveness at very lower doses and minimize the side effects. So they reduce unwanted activity on non-target molecules, because we take a drug and of course it will reach to a target, but it is a chance that it may reach to other molecules and may create other reactions also. So we try to optimize so that this molecules reduces the unwanted activity on other non-target molecules. And finally, we the improved the pharmacokinetics property. So pharmacokinetics. So we ensure the drug has the right properties like solubility, the membrane permeability, so that it can be transported to the site of action within the body, like passing through cell membrane, crosses the blood-brain barrier. That we will discuss in detail in our classes, further classes in detail about those. So then, when all properties like we perform, then we go enters into the preclinical and finally the clinical practices. So preclinical experiments, we use the model organisms, which looks like human. Before testing over to human, we need to test on the laboratory animals. So after optimization, the refined molecules like a potential lead or a candidate drug undergo extensive safety and efficacy testing, and of course for means here we perform in vitro as well as in vivo testing. Okay, so these are three terms generally we use. In vitro means in test tubes, in vivo in animals, and now we use in bioinformatics in silico in computers. So you perform in silico, you perform in vitro, and then you perform in vivo. So, so this is the chain nowadays. The modern trends basically. So testing is done in vitro, in test tubes, dishes, and then in vivo in animals. When we know the animals, we test on cell lines, we test on rabbit, the laboratory mice, we uses for antibiotics, we uses horses, we uses monkeys. So these are our model organisms. They are like humans. They have got uh, their physiology like humans. So if we note down, we look in detail, we try to uh, identify the the problems which may means problems in side effects which the drug create to our body, all pharmacokinetics activity. And so
in when we perform this testing in vivo preclinical trial, so uh, we perform this to gather initial toxicity and dosing data before human testing. This is important. Before testing to human, we need to have at least the data about the safety, means toxicity, and how much dose we will need to enter. How much doses is very important. So this we all do in preclinical trials over our model organisms. Then, when we are quite sure that like it has got means everything is clear and this drug molecule is not so toxic to the human body, then we go for final clinical trials. And clinical trials, these four phases trials: phase one, phase two, phase three, phase four, and this involves various stages of testing like in humans directly. So we select healthy volunteers and then uh, patients with the disease. So why we are doing to confirm the safety, determine the optimal dosage, and prove effectiveness against the target disease. Ultimately, this demanding process weeds out many tens of thousands of investigated compounds to kill perhaps one final approved drug molecules. Okay, so this is a normal drug development pipeline, which is traditional way of developing a drug. So, clinical trials. What are clinical trials and why they're important? So, the goal of clinical phase is to demonstrate that a drug is both safe, that is tolerable by our body, and effective, that is work as we have intended. So in phase one, basically safety and dosing. So typically involves a small group of healthy volunteers, say 20 to 100, and here our objective is to evaluate the drug's safety, that is toxicity profile, and the pharmacokinetics. Okay, so how our body absorbs, distribute, metabolize, and excrete the drug molecule. Okay, so we call it ADMET: absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity analysis. So this is done in phase one over healthy volunteers. Then comes the phase two. So the outcome of this phase is determine this initial safe dose range. How much dose that we can offer to. The dose is very important. Then in phase two, like involves the moderate group of patients, maybe hundreds basically, 100, 200 patients who have the target disease, known target disease. And here in phase two, our goal is to assess the drug's effectiveness, that is efficacy, and gather further data on most effective dose design. And here the outcome is it provides early evidence that the drug actually works and helps identify common side effects. Third is confirmation and scale. In this phase, you know, a large number of patients, 100 to 1,000 patients, uh, these patients with the disease are tested, and here our goal is to confirm the
efficacy, and safety established in the phase 2 on large scale, means which should be statistically sound, applicable to general population. So here it detects less common side effects and validate the risk benefit profile required for the regulatory approval by, like, for example, uh, like our we have in India we have drug controller of India. In America they have FDA. So finally, like in phase 4, once we get an approval, we enter into phase 4. It is a continuous process. Post marketing and surveillance, it is a continuous process that government approved the drug and it is in the market, but studies are going ongoing. Monitor large long-term use of drug specific patient as well as occurrence rare side effects. Okay, so here the goal is to monitor the long-term use and effectiveness of the drug and a specific population and try to look the rare side effects. That means, like for example, here many drugs have failed in this phase 3 or 4. Best example is the nimesulide. Okay, so there are many drugs which fail in this, and but like in poor country like in India, we say we have seen that it is still in the market. I don't know why. Okay, so this is it's very important. So this is the drug developmental cycle. Yeah, it has got, this is the traditional way of drug development cycle. Fact that we have understood that over 90% of the drug and clinical trials fail to make it to market. This is the fact. Average cost to bring a new drug to a market is estimated around $770 million. So it is too costly. So just to reduce down the time and the cost, we entered into the modern methods of drug delivery. So what is the difference? Difference, new and improved. Drug discovery process begin with the disease rather than the treatment. Use disease model to pinpoint relevant genetic or biological component that is possible drug targets. Then once identify the disease, look for this and then discover lead molecule based upon biological target. Then design assay to measure the function of the target, use assay to look for the modulators of the target function. And finally, we perform high throughput screening of compounds to identify probable hits. We call hits compounds with binding in low nanomolar to low micromolecular range. So we obtain these small molecule hits through high throughput screening, manipulate structure to increase potency, that is decrease its Ki to low nanomolar affinity, and that is optimization of lead molecule into a candidate drug. And then fulfillment of required pharmacological properties, potency, absorptions, bioavailability, metabolism, safety. Finally, the clinical trial. Okay, so if you look at the pipeline steps in modern drug discovery, so these are certain. We have performed this pipeline from target identification to clinical phases. So this in this first of target identification, this first step involves identifying a specific molecule, often a protein or a gene that plays a crucial role in disease. The tools used here are primarily genomics, which study the organism's entire DNA, gene expression profiling, which measures how active thousands of genes are simultaneously, means the co-expression level.
Means when means in a case of a disease, how our genetic system is responding. How means you look at the mRNA, which are probably related to our disease, that is expression profiling. And then proteomics, which analyze the entire set of proteins produced by the organisms. So RNA expression and protein expression. So this is based upon this we identify the target. And then once we identify with the target, okay, this is our, for example, in case of here inflammation, we have seen that for our fever or inflammation, we uh, we use aspirin or any like acetaminophen. So target is basically the COX inhibitor, this COX enzyme. So we once we identify, okay, COX enzyme is there, which is responsible for converting arachidonic acid into the prostaglandin. So yes, we directly attack this COX enzyme and block it. Okay, so once we identify this target, we try to validate the target. We call it as target validation. Once the target is identified, we must prove that manipulating it will actually have therapeutic effect. This is validated through technique like gene knockout, where the target gene is disabled to see the effect on the disease, and inhibition assay, which tests if a compound can effectively block the target's activity. Then comes the lead identification. This stage is about finding the initial drug candidate known as leads, and this is often done using this high throughput screening, that is rapidly testing hundreds and thousands of compounds against the screened target. Okay, so other methods include the fragment based screening, which tests tiny molecular fragments and exploring the combinatorial libraries, that is a large collection of synthetically created compounds. So once we have a molecule lead, we can use the adjuvants and linkers to create a large from 1 to billion compounds. So one compound, we can add adjuvants and linkers and make similar analogous multiple compounds. So we call creating a combinatorial library. So it is basically the permutation and combinations. We use various other linkers and adjuvants and create large set of molecules. Then we again optimized, that is the lead optimized. We identified those molecules, screen created libraries, and then come to set of molecules. Then we try to optimize those molecules. This process is called lead optimization, where the initial leads are rarely perfect, so they need to be refined. Medicinal chemist, medicinal chemistry driven approach where optimization focuses on on chemically modifying the compound to improve its effectiveness and safety. Okay, so we use X-ray crystallography are used to visualize how the drug interact with the target, while QSR or the quantitative structure activity relationship uh, models predict biological activity based on the structure, chemical structure. And finally, the ADME profiling, that is, you know that it is absorption, distribution, metabolism, and excretion. So it is performed to ensure the drug has good bioavailability. So bioavailability is a critical parameter ensured by ADME profiling
It is defined as the fraction of a administered dose of unchanged drug that reaches the systematic circulation. That is our bloodstream, and is available to produce a therapeutic effect. Uh, a drug can be potent in a test tube, but if it has a poor bioavailability, it won't work effectively in our body. So this bioavailability is very important. Then, then in preclinical phase, before human trials, the drug is tested extensively in the lab and in animals. This is the preclinical phase measures the pharmacodynamics, or what the drug does to the body, what does drug does to our body, and the pharmacokinetics, or what our body does to the drug. Okay, that is similar to ADME. And comprehensive ADME toxicity testing is carried out primarily using animal models to establish the safe starting point of dose for at least human. If we rank over to human, we test over this model animals. Then we enter into this clinical phase. This is the final multi-stage process where the drug is tested human volunteers, patients. This phase involves the three phase: phase one safety, then efficacy in dosing, and then large scale confirmation of benefits before the drug can be submitted to the regulatory approval like FDA. So this is computer aided here. See, and each existing compound libraries, computer libraries, reduce amount of chemical waste, faster process, lower cost. So this is, computerly. So here we, using applying bioinformatics, what we have done is reduce the time of drug development and reduce the cost. From, like, generally it takes 15 to 20 years for a drug to come to a market, but using after this implementation execution of bioinformatics in this pharmaceutical industry, it takes 5 to 8 years for a molecule to come to a market. So from like 9 lakh compound, 97 compound, come to a very fewer compound. And so hit rate is like 50%. Increased hit rate is very much increased. So we are saving dollars also. Okay, this is uh, as I mentioned. So this is what I really want to convey about the, yes, student. Any question? Anything that, hmm? Any question? Sir, actually, I did not understand one small thing. Yeah. Uh, like when substrate is interacting with an enzyme, Okay. so enzyme will have some active sites where the substrate will go and bind. Right. So our drug should have a similar structure to the drug, similar structure to the substrate or complementary structure to the active site, Complement to the structure. to the So active site of an enzyme. yes. So this, for example, here you can see, like, if you look at, so this is HIV proteases, but just imagine, like, so every means protein has a structure, 3D structure. We resolve this 3D structure crystallography, and uh, we find the pockets, the binding sites, or the catalytic sites. Okay, so drug to take action, like, it has to interact with that site. Okay, if some enzyme is performing the activity by its active sites,
So we either we develop some molecule which can like maybe the inhibitor molecules which can inhibit the activity. By how it inhibits? Either it changes the active site. Okay, so it will, our molecule will bind to the receptor and will change the shape of the active site. So the substrate, actual substrate, will not be able to bind to that active site. So if the substrate will not be able to bind, then that enzyme is, of no use. No product. Clear? Yes, sir. So, what kind of like tools can we use to find complementary? Either we make molecules which bind to the substrate binding site, or we develop molecules which binds somewhere else at the modulator site or the other binding site called the allosteric sites, and which make changes to the active sites. Okay, both the way it works. Okay, sir. Oh, got it. I can recall. I can recall now. सॉरी मैं समझ नहीं पाया कौन. Like I am recollecting back. Right. I hope it is clear now. Yes, sir. Thank you so much. Everybody now, I hope everybody understood the the aspect, clear aspect. And Yes, Uh, sir. any sir, question? Yeah. sir, more doubt I have. हाँ लोकेश बोलो. So, sir, एंजाइम से जब सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है आइदर ऑन कॉम्पिटिटिव साइट और एलोस्टेरिक साइट, इट विल मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, राइट? अब अगर एंजाइम की एक्टिविटी अगर सर ज्यादा है तो वो इसको स्टॉप कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को. अगर किसी केस में कोई डिजीज इस वजह से हो रही है कि लो एक्टिविटी की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी लो है, तो उस केस में सर क्या होगा? तो मतलब एंजाइम की एक्टिविटी लो है इस बीमारी के अंदर. नहीं, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो कम बन रहा होगा. मतलब ऐसी बीमारी है जिसमें जीन एक्सप्रेशन कम हो रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं या प्रोडक्ट यानी कि एंजाइम कम बन रहा है या सबस्ट्रेट कम है, या तो एंजाइम सब कम बन रहा है या सबस्ट्रेट की मात्रा कम हो गई क्या. एंजाइम की लो एक्टिविटी है तो जो रिएक्टेंट जो अभी आपने जैसे एक एग्जांपल बताया था कि उसमें वो प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बन रहा है, तो ऐसा कोई हो तो कि हाँ, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हम की जगह जो हमारा दर्द है, जो हमें बुखार आता है, जो हमारे इन्फ्लेमेशन जो है, सूजन है बॉडी में, ये जो होता है, तो ये इसका रीजन क्या है? ये कॉक्स एंजाइम है ना. तो ये कॉक्स एंजाइम दे कन्वर्ट द अरेक्टोनिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो सिग्नल पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन. तो ये रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इनकी मात्रा अगर ज्यादा है तो ज्यादा दर्द है, जितनी ज्यादा मात्रा उतना दर्द है ना. तो अगर हम इसको बनने ही ना दें, तो यानी कॉक्स टू इनहिबिटर को ही ब्लॉक कर दें, तो वो उस जो कॉक्स एंजाइम जो है, वो एंजाइम इस आर्गेनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट ही नहीं करेगा. तब हमने इसी एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, तो हम कॉक्स टू को फिर जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इससे इसको ब्लॉक कर देते हैं. तो ये एंजाइम जो है कन्वर्ट ही नहीं करता. समझ में आया? आई होप क्लियर. ठीक है सर. हाँ. यस. एनीबडी एल्स? कोई और? ओके. सबको समझ में आ गया इसका मतलब कि ड्रग डेवलपमेंट. हाँ बोलो सर, बेटी. मैं ऐसा पूछना चाह रही थी सर कि ये जो picture है ये भी आप शेयर कर दीजिए ना उसमें ग्रुप में. हम भी क्या? करने में थोड़ा एक मिनट राधा किशन, ये काकी आवाज आ रही है बहुत जोर से आ रही है, इसको बोलना बंद करने का. राधा किशन, उसको इन्फॉर्म करना गेट के ऊपर, ये आवाज बंद करेगा, बहुत ज्यादा कान में बज रही है. ओके ओके. बहुत ज्यादा कान में आ रही है ना. हाँ प्रीति बोलो. कर आवाज नहीं आ दीजिए रही ना. प्रीति, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना.
थोड़ा साफ बोलो, हाँ क्या कहना चाह रही हो? सर, मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि आप पीपीटी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं क्या? ये, हाँ, इसके नोट्स हाँ। में बना के दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू और सो अभी मच। और किसी को पूछना, कोई जो मैंने समझाया कि ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग क्या होती है, कैसे डिफाइन करना है, क्या ड्रग टारगेट्स होते हैं, कैसे इसमें इसके हमारे ड्रग डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, पहले ट्रेडिशनल डेवलपमेंट क्या होता था, क्या फेजेस होते थे इसके, आज का डेवलपमेंट जो है और पहले के डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सबके समझ में आ गया अच्छे से? ये प्रोसेस ये है हमारा जो हम करेंगे पूरा, ये चीज समझ में आ गई सबके? ये फिगर क्लियर होना चाहिए। यस सर। हम्म, ओके। तो आज जैसा मैंने बताया कि ये तो है, तो आज कुछ हम प्रैक्टिकल करते हैं कि एस्पिरिन को एक, जो जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, तो हम कॉक्स टू इनहिबिटर को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि एस्पिरिन कैसे जुड़ा हुआ है ना? ठीक है। तो इसके लिए यस, एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लें, एवरीबॉडी। आज भी राधा कृष्ण लोग 43 हैं यार, क्या चक्कर है? बच्चे की एब्सेंट इतनी कैसे आ रही है ये सब चीजें? सर, आज करवा चौथ है। करवा चौथ तो है, 8 बजे होगा, तो आई नो ये है, बट हाँ, लेकिन सर फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हम भी हाँ, नहीं, बस करवा थोड़ा चौथ है, बट देखो ये हर एक क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि ये सब, है ना, बिल्कुल उसके सर, लिए अब क्लास ज़्यादा भी। इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है सर ग्रुप में मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जो फीमेल्स है वो सब मैरिड है। तो और घर पर भी सबके बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए भी वो हो सकता है सर। बाकी हम लोग भी अटेंड कर रहे हैं सर अच्छा, क्लास। ये बात से सबके डॉक्टर प्रीति से कौन कौन एग्री करता है ये बात? तो अगली बार से मुझे ध्यान रखना सारी पड़ेगा। फीमेल। अगली हाँ बार से सर, मुझे सारी बहुत ध्यान फीमेल रखना पड़ेगा। होंगी। नहीं, अगर ये बात है तो मुझे सर तो अगली बार से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा स्क्रीनिंग करते समय। बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा स्क्रीनिंग करते समय, है? हमारे एल्गोरिथम को चेंज करना पड़ेगा हमको। लड़कों, ये जो है बात, कौन कौन एग्री करता है इस बात से? अच्छा, जनरेट structure from text or generate text from structure, say IUPAC name. Now it will give you the IUPAC name of any compound. If you want, if you want to draw any pharmaceutical compound, any, for example, aspirin, go to chemistry, go to structure from text. Structure from text. IUPAC name, so just write aspirin. Okay, it will give you aspirin. And suppose you want to know the IUPAC name of aspirin, go to chemistry, generate text from structure IUPAC name. So this is the IUPAC name of aspirin. You can draw a carbon chain, any aliphatic chain like this. Right click, add hydrogen photo. Right click, add uh, photo. Okay, so this is how
You can select chemistry, generate text from structure IUPAC name. It's octane. यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना हो, you select any this double bond, click here, then again generate chemistry, generate text. This is IUPAC name. Oh, so chemistry is so easy now. Can you see? For example, say paracetamol, IUPAC name. Just write paracetamol. It will generate paracetamol. Or you write another, say, uh, aceto aceto aminofen. The chemical name of this is acetoaminofen. So you can see acetoaminofen. Acid aminofen. Okay. Copy. यूएस में ये टाइलिनोल के नाम से बिकता है. सो chemistry, generate structure from text. Write this. So you have copied the wrong one. हाँ? अच्छा, जो आपने टाइप किया था वो आपने कॉपी कर लिया था. अच्छा, इसीलिए एसीटा अभी सही है. एसीटा अमीनोफेन अभी सही है. केमिस्ट्री, जनरेट स्ट्रक्चर फ्रॉम टेक्स्ट. एसीटा अमीनोफेन नहीं लिया इसमें. पैरासिटामोल ही ले रहा है. एस्पिरिन और भी कुछ तो नाम कुछ बताओ. जनरेट स्ट्रक्चर फ्रॉम टेक्स्ट. ये कोलेस्ट्रॉल करते हैं. कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल बन गया. ओके, सभी को समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. Yes, sir. सिंपल है बहुत. अब इसका मुझे आईयूपीएसी नेम चाहिए होगा तो मिल जाएगा मुझको. और यहाँ न्यू कर दो. यहाँ पे अब कोई भी स्ट्रक्चर बन जाएगा. फिनॉल बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा. साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन, नॉर्मल बेंजीन रिंग. दिस इज कुछ भी लगा सकता हूँ. ऑक्सीजन लगाना है मुझे, यहाँ बन जाएगा. सीएल लगाना है यहाँ तो क्लिक करूंगा. कार्बन पे जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा. अब इस ग्रुप को चेंज करना है तो आई विल से सीएल. ये सीएल आ जाएगा. क्लिक. कुछ भी बन जाएगा ग्रुप. कोई भी स्ट्रक्चर बना लोगे. अब आई होप एवरीबडी कैन मेक एनी स्ट्रक्चर. यहाँ कुछ भी लगाना है. सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मुझे लगाना है. सेलेक्ट करूंगा. यहाँ OH लगाना है तो आई विल सेलेक्ट दिस. और यहाँ O पे क्लिक करूंगा. आई विल क्लिक दिस.
आई क्लिक दिस। अब इससे बाहर निकाल के लगाना होता तो अब इसका आईयूपीएसी मुझे जानना है, व्हाट इज दिस आईयूपीएसी नेम। क्लिक कर कर सेलेक्ट करूंगा, केमिस्ट्री में जाके जनरेट टेक्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम, ये इसका आईयूपीएसी नेम आ गया। इसका स्माइल फॉर्मेट चाहिए होगा तो स्माइल फॉर्मेट चाहिए होगा, सेलेक्ट करूंगा केमिस्ट्री जनरेट स्माइल स्ट्रिंग। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हम केमड्रो काम में लेते हैं, जैसे अभी जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ की ये केमिकल व्यू से गलत है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, अगर ट्राइवेलेंट होगा तो इस पे चार्ज आएगा, तो यहाँ राइट। पे इसने वो एरर नहीं बताया। हाँ इसको ऑप्टिमाइज करना है, मैं तो लिखता जा रहा हूँ बीएल, बट इसको हमें वैलेंसी चेक है इसके अंदर, है ना, अच्छा ओके सर। सारी चीजें इसके अंदर है। यस सर। हाँ? तो अभी हमने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी जनरेट करना बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। हाँ, ये स्ट्रक्चर रिजॉल्वर क्लिक करोगे तो आप जो भी इसमें स्ट्रक्चर डालोगे वो इसमें कर देगा। हम्म? यहाँ पे यस है सर। ना, कुछ भी नाम डालेंगे वो यहाँ पे करता चला जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट डालेंगे कर देगा उसको। ठीक है? तो अभी मैं तो ये बता रहा हूँ अभी कि ये कैसे काम करेगा। आपको बनाना है कुछ भी केमिकल तो बन ही सकता है, वो सही है नहीं, देन वो हमें इसको रिजॉल्व करेंगे तब हमें बता देगा। ठीक है, अब जैसे मुझे इसको सही तरीके से बनाना होगा, क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे इसको, तो यहाँ पर मैं कार्बन पे जाऊँगा, आई क्लिक ऑन कार्बन, सॉरी कार्बन पे जाके आई क्लिक ऑन कार्बन। मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होगा तो मैं यहाँ कार्बन पे जाके एक कार्बन लगा लेता हूँ, ऑक्सीजन जाके एक ऑक्सीजन लगा लेता हूँ। हाइड्रोजन मुझे दिखाना होगा, इसमें राइट क्लिक, राइट क्लिक करके हाइड्रोजन डिस्प्ले ऑटो। ओके, सर ये सभी स्विच एडिंग कर सकता हूँ ना सर? सेलेक्ट करके डिलीट। अब मुझे इसका स्माइल चाहिए होगा तो यूज इसका आईयूपीएसी मुझे जानना होगा, करेक्ट जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम दिस दिस। मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना होगा, केमिस्ट्री में जाके 3D के अंदर क्रिएट लाइन। ओके, अच्छा ये तो है ही, ये हम लोग 2D बना रहे हैं, है ना। और अब सभी बनाने लग गए, तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। नहीं, उन्होंने केवल ये लिंक सेंड कर दिया, इस लिंक पे से डाउनलोड कर लो। अभी लिंक को खोल रहे हैं तो ये आ रहा है, मैंने इसको यहाँ तो क्या हो डाउनलोड नहीं हो रहा है। गया, ओके। अब जैसे काइमेरा के अंदर मैं बात कर रहा था, ओके, काइमेरा आज या डिस्कवरी स्टूडियो के अंदर भी मैं क्लाइंट में जाता हूँ, ओके, और मैं काइमेरा भी खोलता हूँ। इसीलिए लगा। ये इसका स्माइल चाहिए होगा, केमिस्ट्री जनरेट टेक्स्ट स्माइल स्ट्रिंग। ओके, सो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ डिस्कवरी स्टूडियो में भी इजीली बना सकता हूँ। कैसे बनाते हैं देखो बताता हूँ।
ये हमारा डिस्कवरी स्टूडियो खुल गया। यहाँ से हमारे पास ये स्माइल स्ट्रिंग है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस डिस्कवरी स्टूडियो में जाके न्यू में जाके या फाइल में जाके न्यू में जाके इसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। और केमिस्ट्री, ओके, लेट्स ओपन समथिंग, एक न्यू विंडो। Then file, insert from smile. Here you enter your smile string, जो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर ओके, तो वो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा। इंग्लिश का अब इसके बारे में, इसका एटम का पूरा जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, खीर बना लेते हैं। मॉलिक्यूल सारा काम थोड़ी सी देर की क्लास करके। ओके, यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर सीक्वेंस न्यूक्लिक एसिड डीएनए बना सकता हूँ, कोई भी चेन को मैं बना सकता हूँ। बिल्ड एंड एडिट न्यूक्लिक एसिड, बिल्ड एंड एडिट प्रोटीन, इंटरैक्शंस, व्यू इंटरैक्शंस, सुपर इम्पोज प्रोटीन, साइड चेन रोटामर ऐड करना हो। ओके, तो ये जो है प्रोटीन्स के लिए है। प्लस मेरे पास में एक टेबल और है पूरा, मैं कोई भी चीज में ऐड कर सकता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि स्माइल फॉर्मेट से भी मैं ऐड कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर मुझे यहाँ चाहिए होगा, इसमें जा रहा हूँ, मुझे एस्पिरिन ऐड करना है, तो एस्पिरिन को मुझे ऐड करना होगा। मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। स्ट्रक्चर किया, जनरेट स्ट्रक्चर फ्रॉम टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्पिरिन, ये बना दिया। इस एस्पिरिन का मैं स्माइल फॉर्मेट ले लेता हूँ, केमिस्ट्री, जनरेट स्माइल फ्रॉम दिस। ओके, अब इस स्माइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरे बायो या इसमें स्ट्रक्चर में जाकर एक नया विंडो ओपन करता हूँ, न्यू विंडो ये, और इसमें मैं पेस्ट करता हूँ स्माइल फॉर्मेट। तो कैसे करूँगा? यहाँ इंसर्ट, एडिट में जाके, इसमें फाइल में जाके इंसर्ट फ्रॉम स्माइल, ये आपने जो कॉपी कर रखी यहाँ पेस्ट कर दें। ओके, तो वो उसके दे देगा, उसने जो दोनों का स्ट्रक्चर, दो थे वहां पर, उसने दोनों दे दिए। तो मुझे इसका नहीं चाहिए, इसका भी दे दिया उसने, डिलीट कर दूंगा मैं इसको। अब सिर्फ मुझे इसी का चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया,
केमिस्ट्री में गया, टेक्स्ट हिस्ट्री, ये एस्पिरिन का कॉपी किया और इस डिस्कवरी स्टूडियो में जाके अब मैं इसको उड़ा देता हूँ और फाइल में इंसर्ट फ्रॉम स्माइल में जाके मैं एस्पिरिन का एक स्माइल फॉर्मेट को ओके करता हूँ। ये मेरा एस्पिरिन मॉलिक्यूल आ गया। अब इसको मैं बॉल स्टिक में दिखाऊं। अब इसको जब भी इसमें लाते हैं तो इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर को ज्योमेट्री क्लीन करते हैं। ओके, तो इसमें जो बॉन्ड और एंगल है वो सही आ जाएंगे। सेलेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में जाके क्लीन ज्योमेट्री। ओके, इस तरीके से ये आपका जो है ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। सेंटर में करना हो, क्लिक हियर, जूम। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है हम वर्ड में पावर पॉइंट वगैरह यहाँ से कॉपी कर सकते हैं क्या? आप क्यों नहीं कर सकते हो? XP से। इसका फोटो ले लो आराम से। इसका फोटो जो है ना, इमेज को सेव कर लो। जैसे इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, या फाइल में जाके ये इसकी इमेज कर सकते हो। ये सेव एज है, फाइल प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सर बैकग्राउंड चेंज कहाँ से करेंगे? हो जाएगा वो भी। यहाँ पे जाओ, देखो ये दिखाई दे रहा है सारा, इसके अंदर यस इमेज सर। ये आ गया, पीएनजी यस इमेज सर। आ जाएगा। इसका नाम दे दो, सेव कर लो। ये बैकग्राउंड इसका यहाँ से चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड ये भी ब्लैक आ रहा है, इसको व्हाइट कर दो, ये व्हाइट कर दो, तो व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। आ गया? यस सर। इसका फोटो खींच लो। इसको लेबल करना है सबको। इसको राइट, यहाँ इस पे यहाँ राइट क्लिक कर लो। व्यू में ये देख रहे हैं हम लोग, बॉन्ड भी आ रहा है। लेबल करना हो, राइट क्लिक करके व्यू, लेबल ऐड। तो एटम का नाम क्या करना है, एटम, बॉन्ड, मॉलिक्यूल, किसको लेबल करना है। मैं एक बार मॉलिक्यूल को करता हूँ। और नेम क्या करना है, कैलकुलेट चार्जेस कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ नाम चाहिए। ओके, ओके करता हूँ। जो भी सेलेक्ट करूंगा, मुझे हर एक एटम को करना होगा तब भी कर सकता हूँ। मॉलिक्यूल, राइट क्लिक, इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं। और इसमें देखो सभी के ऊपर यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा नाम। लेवल का साइज बड़ा करोगे, मेरा इसमें थोड़ा रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो ये थोड़ा छोटा दिखाई देगा। हर एक एटम को यहाँ पे वैसे दिख जाएगा वो। ओके, तो जैसे चलो ये तो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर बना लोगे सब लोग, चाहे इसमें या उसमें। आई होप
इसमें भी कोई बनाना होगा तो इसमें भी बन जाएगा। बिल्ड एंड एडिट न्यूक्लिक एसिड, बिल्ड एंड प्रोटीन। मुझे कोई प्रोटीन बनाना है, एलेनिन बनाना है, तो ये एक एलेनिन आ गया। ये 3D स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको उड़ा देता हूँ, यहीं से उड़ा देता हूँ, डिलीट। ठीक है, अब ये मेरे पास में मॉलिक्यूल है, ए चेन है, एलेनिन मेरे पास मिल गया है। इसको फोकस कर लेता हूँ। इसका रोटेशन एलेनिन आ गया। इसके साथ में मैंने एक आर्जिनिन और ऐड कर दिया। इसके साथ में फिर मैं एक एस्पिरिन ऐड कर देता हूँ। आर्जिनिन के बाद किया एक एस्पेटिक एसिड ऐड कर देता हूँ। 1 2 3। ओके, ये करने के बाद में इस चेन को सेलेक्ट करके स्ट्रक्चर में हमें क्लीन ज्योमेट्री कर देंगे। तो ये देखो चेंज आ गया। इसके बॉन्ड एंगल, फाई और साई एंगल जो भी होते हैं वो सही हो जाएंगे। ओके, अगर मुझे कोई प्रोटीन डेटा बैंक से डायरेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं यहीं से ला सकता हूँ। ये वेब से जाऊंगा, यहाँ मैं सिंपल उसका नाम लिख दूंगा। मुझे सपोज मुझे डाउनलोड किया था मैंने एक सिंपल 1CRN क्लिक। ओके, तो देखो यहाँ पर वो 1CRN डाउनलोड कर दिया उसने। इसको मैं एटम भी दिखा देता हूँ इसके। ओके, तो मुझे यहाँ पर सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसका सिंपल। इसका चेन में देख लेंगे हम लोग, पूरा चेन आ जाएगा। एनसीसी इसका, एनसीसी साइड चेन, एनसीसी साइड चेन। ओके, मुझे इसकी बैकबोन दिखानी होगी सिंपल। तो ये देखेंगे हर सी अल्फा एटम से, हर एक सी अल्फा एटम से जुड़ा हुआ है। क्लियर? Can we create the protein structure from the sequencer? Like when we give the sequence, can we create a 3D structure of the protein? यही तो बनाया मैंने अभी यार। ये रहा ना, ये बनाया ना। When we have a sequence, amino acid sequence, and we give the sequence to the हाँ software, and it gives a हाँ, 3D ये structure. है ना, Whether यहाँ is it possible? So, पर यस, इंसर्ट में यहाँ पर चले जाओ, या इसमें ग्रोथ चेन में क्रिएट में है। अ, क्या बनाना है मेरे को? सपोज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाना है। आई सेलेक्ट राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ओके, और अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड में इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर कल राइट हैंडेड एक क्रिएट
कन्फर्मेशन राइट हैंडेड हेल्प हेलिक्स। अब मुझे जो भी बनाना है तो मुझे पता ही है कि कोई मेरी 1 लेटर कोड बोलो, टेल मी द कोड, यहां से देखकर भी बोल सकती हो। या 3 लेटर कोड है तो 3 लेटर कोड भी यहाँ पे डाल दो, सपोज ये वाला है एलेनिन, यहाँ तो लिखना पड़ेगा, वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ में लिखना पड़ेगा। सिंगल लेटर में करना है तो हम लोग यहाँ पर सिंगल लेटर के अंदर लिखेंगे कि कैप्स करके एलेनिन कर लेते हैं, लाइसिन लाइसिन के, एलेनिन आइसोल्यूसिन फिनाइलएलानाइन, स्टार्टिंग कर लेते हैं मिथ्योनिन से। ओके, ये चेन मैंने बना ली, ठीक है। नमस्ते सर, नमस्ते। एंड देन क्लिक ओके। सो ये देखो, ये इसने राइट हैंड अल्फा हेलिक्स में किया। इसको सेलेक्ट करके स्ट्रक्चर में क्लीन, ज्योमेट्री क्लीन कर दो। ये क्लियर? हाँ, Yes, sir. I understood. मिला, समझ में आ गया? हाँ सर। मैं इसमें राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता हूँ। अगर मुझे लेफ्ट हैंडेड बनाना होगा तो लेफ्ट हैंडेड बना दूंगा, कुछ भी मैं बना सकता हूँ। राइट हैंडेड हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, व्हाटएवर म्यूटेट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेसिड्यू को, चेन ग्रो कर सकता हूँ, इसको ग्रो चेन मैं आप इसके आगे हमें और भी आगे ऐड करना चाहता हूँ, सपोज ट्रिप्टोफैन, मैं यहीं पर ही इसी के अंदर मैं आखिर में जाके यहाँ जाऊंगा, आई सेलेक्ट दिस एंड आई क्रिएट ग्रो चेन राइट में। अब मैं इसमें आगे ग्लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानाइन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, आइसोल्यूसिन, हिस्टीडीन, ग्लाइसिन, लाइसिन। हाँ, देखो बन रहा है हेलिक्स। बन गया हेलिक्स। Yes, sir. तो कोई भी पेप्टाइड बनाना होगा, वी कैन इजीली क्रिएट अ पेप्टाइड। सर ये सी अल्फा चेन, सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा है हर एक का। हाँ बोलो, यस। sir, I am not able to down, like I downloaded discovery bio yeah thing from. हाँ, here from here downloaded this draw and this. No sir, no sir, I do not get that. I do not. You go to this link, you can download draw, or you can download the BioVia Discovery Studio from here. I have shared the link in chat box. Here, Like I downloaded, but I am not able to open the file. which file? Like downloaded file. You when you click, you will download it file, exe file. Or Yes sir. you are, so here you go to download here, click this box. Okay, Yes. downloaded folder. Go to downloaded folder. You can see the file. Right click and run as administrator. It will open. Yeah. Run as administrator. Yeah. Go to this where you are downloading. Click array, or if you are not able to see the arrow, click here. Then go to downloads. Click here. In downloads, you will find this. Go to this browser. This file structure. Click here. You will be taken to your downloaded folder, and you can see the file. Okay. Is it okay? Who was facing the problem? Priyanka. Who was facing the problem? I couldn't see.
Yes, everybody. I hope everybody downloaded the structure, both the software. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, tell me. I will try to solve the problem. So for me, it is showing DS Visualizer Client Linux 64-bit. It is not showing like draw. No, draw. This is visualizer only. I have not downloaded because I have already downloaded. So I have not downloaded. Okay. Visualizer Client Linux 64-bit. No, don't download. If you are, what machine you are using? If you are using, Linux software, sir. you are using Linux machine. Yes, sir. Okay, then you can download the Linux version. I downloaded, but I am not able to expand it. Like it is not showing anything. You know, in Linux you will see a bin file, na? In Linux, Yes. here in Linux, Uh, this client file, na? yes, It is sir. bin file. Yes, sir. I did the same. This is bin file. Okay. Download, open BioVia. Okay, download this bin file. Once downloaded, na, then you go to command prompt. Okay, once you download it, go to command prompt and write chmod plus x and then file name BioVia. Okay, we just press the tab chmod plus x and then name of the file. Okay, Okay, sir. are you able to follow me? Mm. It is showing unable to expand BioVia client when it is an unsupported format. Listen, if you will listen me carefully, then Sir. you okay. So here, go to command prompt, go to download folder, cd to your download folder where you have downloaded. Go to download folder Okay, sir. and then you can see the file there. हाँ, sir. Okay, just write chmod plus x. Oh, plus x and then your file name. Okay, press enter. Kara? Maybe she is using MacBook Air, it seems, sir. Maybe MacBook can support Linux or not, whether she can check it. No. MacBook is different, man. No. You are. I thought you are using Ubuntu. Yes, sir. Yes, sir. MacBook, it is different. DMZ file is there. Um, Sorry, sir. I do not understand. That is different one. DMZ file is there for MacBook. I don't know whether it is able to. But okay, you try it. Then you just change mode to X and then press like this dot slash and enter it. Okay, sir. Okay, to run the command dot slash and enter dot bin file. Clear? Okay, sir. If Uh, you I don't know how to operate this, but I'll take help to download it. okay, because in here when you go to this Chimera, na, here look, this is OS 16, this is DMZ file Okay, sir. for Mac OS.
Okay. Okay, sir. So I don't know whether they provide for MacBook. I don't know whether it will work or not. I can open Canada, but not this. Okay, look, this is bin file is able. It is downloading. Yes. Okay, so here as you can see, you can work in Linux also. Here you can see, so you have a Linux. You can download in Windows. You can work on Linux. I have downloaded the Ubuntu from Microsoft Store. Just write Ubuntu and install. It will install the or you can write WSL command to install directly. But for that, from BIOS uh, uh, you have to enable the layer for WSL. Anyway, so now today, I have explained how to create uh, any chemical structure in BioWare Draw based upon your string or just the structure. You can draw any structure very easily, any chemical structure. हेलो सर. Yes, Indranil, bolo. What's problem? सर सर ये स्विस एडी में सर ये जो कर रहे हैं आप, ये तो स्विस एडी एडीएमई से कर सकता हूँ मैं. स्विस एडीएमई से भी कर सकते हो, वहां पर पब कैम में भी कर सकते हो, ड्रग बैंक में भी कर सकते हो, मार्विन स्केच से भी कर सकते हो. बट ये एक कॉमर्शियल टूल है अच्छा. और इट इज हाँ. कॉमर्शियल प्रोफेशनल टूल है, फ्रीली अवेलेबल है और इट इज गुड कंपेयर टू दोज. दिस इज वेरी यूजर ओके फ्रेंडली. सर. ठीक है. When आप जब वहाँ ठीक है सर. पब यू कैन ड्रॉ, ड्रग बैंक में भी यू कैन ड्रॉ, मीन्स ऑल मेजर डेटाबेसेस यू कैन ड्रॉ. Okay, but in ठीक है discovery सर. so you can make helices, whatever secondary structure based, it is up to you that whatever structure you want to make, you can easily make the structure peptide molecule. Okay, so this is your Discovery Studio version. Any question regarding this? Creating a structure either in Draw or using Discovery Studio. Just now practice and perform yourself. Okay.